Rajendra Singh Thakur sir from Central Salt and Marine Research Institute, CSIR, Bhavnagar, Gujarat, India. Professors, research scholars, and my fellow mates. I would be glad to request Patle sir to welcome our invited speaker by presenting a bouquet as a token of respect. Thank you, sir. Now I ask our Vice President of Chemical Council, Gungru, to present flowers to Patle sir. Thank you, Gungru. Now I would like to call Patle sir to come on stage and address us. Good afternoon to all of you. आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर आयोजित इनवाइटेड लेक्चर सीरीज के लिए हमारे बीच सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR भावनगर से एमिनेंट साइंटिस्ट डॉक्टर राजेंद्र सिंह ठाकुर सर यहाँ उपस्थित है और उनके इंट्रोडक्शन के लिए अभी जेना सर आपसे मुखातिब होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। इंडियन फिजिसिस्ट जो है ग्रेट फिजिसिस्ट डॉक्टर CV रमन, जिन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी और उन्हें उनकी इस खोज के लिए 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला था। आप लोग जानते हैं कि रमन प्रभाव किस तरीके से स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे बेस्ड है और फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही स्ट्रीम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कवरी थी। तो इसी संदर्भ में हमारे महाविद्यालय में लेक्चर सीरीज यहाँ पे आयोजित की गई है। मैं रसायन विभाग की ओर से और शासकीय विज्ञान महाविद्यालय की ओर से डॉक्टर राजेंद्र सिंह ठाकुर सर का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज प्राचार्य शायद किसी अन्य मीटिंग में गए हुए हैं। हमारे केमिस्ट्री के विभागाध्यक्ष अरुण मिश्रा सर भी अभी यहाँ उपस्थित नहीं हैं। तो जितने स्टाफ मेंबर्स हमारे यहाँ उपस्थित हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। MSc के स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं चाहूँगा कि डॉक्टर विनोद जेना जो हैं यहाँ आए और डॉक्टर राजेंद्र सिंह ठाकुर सर का इंट्रोडक्शन दें। हालांकि ठाकुर सर रविशंकर विश्वविद्यालय से MSc इन्होंने की है, यहीं से पास आउट है और जेना सर उनके बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं। आप लोगों को उनका इंट्रोडक्शन देंगे। सो प्लीज डॉक्टर विनोद जेना, प्लीज। Thank you, sir. Finally, I call Jenna sir to introduce our guest of honor. Today's our expert, Dr. Rajendra Singh Thakur, all faculty members of our institute, and my dear student, very good afternoon to everyone. ठीक है, सुनाई देनी चाहिए बस। हमारे एक्सपर्ट के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा छोटा सा किस्सा है उनके बारे में बता दूं, क्योंकि हम उनसे बहुत लंबे समय के बाद मिल रहे हैं। ये किस्सा थोड़ा सा छोटा स्टोरी है, अगर आप परमिट करें तो। 2004 की बात है, सर शायद MSc फाइनल ईयर में रहे होंगे। यूनिवर्सिटी में स्टीरियो केमिस्ट्री के बहुत बड़े प्रख्यात विश्व प्रसिद्ध साइंटिस्ट डॉक्टर PS कलसी सर का लेक्चर चल रहा था, पर हम दूसरे कॉलेज से तो दुर्ग साइंस कॉलेज से तो डरे डरे पहुंचते, यूनिवर्सिटी है करके। तो पहुंचे हम वहाँ, सर का लेक्चर चल रहा है, सब चीज चल रहा है। फिर बाद में हम गौर कर रहे हैं कि डॉक्टर कलसी सर इतने बड़े विद्वान, किसी व्यक्ति से
अपने स्टीरियो केमिस्ट्री पे डिस्कस कर रहे हैं। हम सारे स्टूडेंट सुन रहे हैं कि ये क्या होगा, वो क्या होगा, कॉपी लेके बैठे हैं, लिख रहे हैं। एक व्यक्ति डिस्कस कर रहा है। तो उसके बाद जाते सर कलसी सर उनसे बोले, बाकी सबको बोले पढ़िए अच्छे से, मेहनत कीजिए। अब उनको बोलते हैं कि यू आर द साइनिंग स्टार। तो ये क्या बात है भाई? फिर आज पता चलता है इतने सालों बाद कि वो साइनिंग स्टार और कोई नहीं हमारे बीच, खुद डॉक्टर राजन सिंह ठाकुर। सोचिए, डॉक्टर कलसी सर केमिस्ट्री वाले जानते होंगे, उनकी किताबें दुनिया भर में चलती है। स्टीरियो केमिस्ट्री एमएससी में हम सोचते हैं ये क्या है क्या नहीं, उस समय डिस्कस चल रहा था, हमको समझ में नहीं आती थी ये है क्या। तब वहां डिस्कस चल रही, तो बड़ी बात, हमारे लिए बड़ी बात, आप लोग ज्यादा नॉलेज वाले। डॉक्टर राजन सिंह अपनी एमएससी यूनिवर्सिटी पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी से 2004 में कंप्लीट किए। उसी साल नई अचीवमेंट उनके लिए, पता नहीं कहां से स्टार्ट करूं, हमारे पास शब्द कम है। जेआरएफ कंप्लीटेड फाइनल ईयर में, एसपीएम फेलोशिप, श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप उसी साल, आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर क्लियर्ड उसी साल, टीआईएफआर, आईआईएससी सारे एग्जाम क्लियर्ड। उस समय बहुत हल्ला होता था, ये कौन है, इस धरती का है कि कोई और कहां से आया करके। हमको तो लगता था कि भाई ये कौन है, ये सारे एग्जाम को ऐसे ले रहा है, हम लोग सोच रहे हैं क्या करें क्या नहीं करके। तो एक इंस्पिरेशन टाइप की लगती थी। उसके बाद उन्होंने पीएचडी किया आईआईएससी टीआईएफआर मुंबई से। उनके नाम अनेक रिसर्च पेपर्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, फेलोशिप के नाम पे दुनिया भर की फेलोशिप है। काउंटिंग के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। सर दिखते ऐसे हैं सिंपल टाइप से, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके के नॉलेज भर के रखे हैं। सो इट्स माय प्लेजर, इट्स माय ऑनर टू वेलकम आवर चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर Dr. Rajan Singh Thakur before you all. I think he will enlighten, show knowledge or depth of knowledge before you all. Thank you. Okay, so I will call our chief guest to enlighten us with his thoughts and share his views so that we can use it in our future. Please, sir. Thank you, Jana sir, for a very nice introduction. So, ऊपर से कोई भी दो। और पॉइंटर तक, अच्छा ठीक है, चलेगा, हो जाएगा।
Hello, check. Good afternoon, everyone. Uh, I am a resident of Chhattisgarh, passed out from Ravi Shankar University. And if somebody want to talk to me in local language, I will definitely entertain the question. So that's the only. So as you, my work has been scattered in few different what is called avenues. So some of the, when I joined, the director of the institute, called me. He used to call every fresher, and he said, I have some problems. Can you add something to that problem? So couple of those problems were assigned to me, and I said what I can do. He said, you are a chemist, figure it out. Hai na? So that's where those work came out to be. Hai na? Let us start. Okay. Now one of the thing is CSIR stands for Council of Scientific and Industrial Research, and earlier they were known by regional research laboratories. So we are supposed to work in the local problems. So Central Salt Lab was focused upon study of salts, and invariably it came, people also started working upon water purification. So let us see, there are some couple of interesting chemistry is shown in this particular slide. One of that is, people add lime to remove calcium. People add calcium to remove calcium. And this happens in all the water plants. Okay. So all of us know that, the temporary hardness comes from calcium and magnesium salts, bicarbonate, etc. A very cheap way to remove is you add calcium. So bicarbonate gets converted to carbonate and everything gets precipitated. Okay, yeah, thank you. Okay, so the CO2 is there in the water, that gets converted into bicarbonate, and the moment you add lime, bicarbonate gets converted into carbonate, and it is known by the Clark's process. Okay, can we take out some of these things? This photograph and this. ओके आप उसको नीचे साइड रख दो यहाँ कहीं पे. हाँ जी. So the other interesting chemistry example for water purification is the removal of arsenic. Okay, somebody figured out that arsenic exists in the form of arsenic 3 oxide and arsenic 5 oxide. Okay, so arsenic 3 is far more what is called poisonous, harmful. Naturally, the arsenic exists with some rocks, and because of agricultural activity and in our anaerobic processes, arsenic 5 gets converted to arsenic 3. So somebody said, okay, let us remove water from subsurface area, okay, expose it to sunlight and air, then arsenic 3 gets converted into arsenic 5. The water is now rich in oxygen, and we will release it back to the subsurface water below the ground. So then again arsenic 3 gets converted into arsenic 5. You fix your problem very easily. So these are the examples. Okay, sorry. Okay,
So one of the work which was given to me was, some of the scientists were working on fluoride removal in our lab, and director said, the rate at which the treatment happens is very, very slow. Why don't you try and make it very, very fast? So we wrote a project. Okay. Now, it's actually, the problem was not really new. See, the original patent of fluoride removal by alumina was done in US in 1930s. What US people used to do is, they used to add acid to water so that the water pH goes around 4 to 6, and then that used to pass water through the alumina, and that treatment was happening. When Indians wanted to adopt it for our conditions, they said, adding acid to water, we don't want to do that. So they didn't add acid, and the process was very, very slow. So when they added acid to water, they could treat 45 liter in 1 hour for 1 kg of material. If you are not adding acid, then it goes down to 3 liter per kg per hour. So what we said, and then in this US patent they said, okay, add acid to water and you regenerate with base. What we said, what we can do is, and then these people were using H2SO4 and sodium hydroxide. Okay, so we said, let us take some acid which you can put it on your hand. So there are solid acids, KHSO4 and NaHSO4, potassium hydrogen sulfate and sodium hydrogen sulfate. You can put it on your hand. It's not really a problematic thing. So what we did, we took an acid solution and simply passed the acid solution through a column of alumina. Okay. And it works for KHSO4, doesn't work for HCl. So basically when we did this pre-treatment, we were able to get very fast fluoride removal. As you can see, initially what used to take like some 60 minutes, we could get it done in 5 minutes. Okay, so how did this thing work? So it works in a very simple manner. The phenomena is based on what is called adsorption. Okay, and we have studied about adsorption. There is an adsorbent and there is a species in water. Okay, then you can draw out your isotherm, etc. But there is also a concept of interference. Your species of interest in water need not be alone. There may be other things also. And in this case, it was reported by many people that hydroxide and carbonate has very strong interference to fluoride removal process. So all we need is somehow we have to take care of bicarbonate and OH. So this is the affinity order. If I can take care of bicarbonate and OH, I can easily get a very fast fluoride removal. That's what was happening in this process. So when we take alumina, it was the whole thing was made in water. So it came coated with OH and bicarbonate. When we wash it with acid, the surface is regenerated. There is nothing to interfere, and we could get a very, very fast process. And in this case, we actually don't really have to regenerate, because when I am passing the acid through alumina, I am able to generate free surface. So that was the thing for which we got a patent. And then we also found out that not every alumina variety is suited for defluoridation. In fact, activated alumina is some kind of amorphous material, and you can make thousands of variety of that. Okay, there are many starting material. There can be, you can do acid treatment, base treatment, and if you can reproduce your condition, you can generate the same variety over and over. It's a very reproducible reaction. So it's a amorphous material, transition alumina they call it technically. So we figured out, okay, what kind of alumina you need, what physical chemical property it should possess so that it works for fluoride removal. So what we found out that the alumina which is what is called short range alumina, which is not very crystalline and has a positive surface charge.
Okay, so crystallinity we determined with XRD and TGA kind of measurement. Okay, so and the surface charge is simply what is called, we put alumina in a solution of different pH, and then we recorded, we plotted final versus initial pH. So the alumina which had a positive surface has absorbed more larger number of negative ions. So that is how we have come to this diagram. Okay. The other problem which was assigned to me by the director of the lab was, they were making dustless chalk. CSM Sari was making dustless chalk, and this is now in public domain. So why dustless chalk? Okay, that was an interesting question. And how to make dustless chalk? Because dustless chalk, all the varieties which were available, I think it was China produced or produced in other countries. So can we make dustless chalk with our resources? And to tell you something, if you want to remove salt from seawater, a lot of magnesium carbonate, calcium carbonate, lot of other things comes out first, then salt comes as 7th or 8th product. So we already had enough of calcium carbonate and some other material. So people said, okay, let us try to use it, and that is how this whole project was generated. Now coming to regular chalk and dustless chalk, regular chalk looks like conical. It's lightweight. You can easily lift. It has lesser weight than this one. It's cheap. It's hydrophilic. While using, you realize that okay, your fingers are getting dried. It is made up of gypsum, and it's a mold casting process. You make a structure, you pour your solution and take it out. While in dustless chalk, it's cylindrical, it's heavier than the other one, it's costly, 4 to 5 times costly. It is hydrophobic. Even if you dip it in water, and start writing, the upper layer will go away and then you can easily write. So it is made up of a hydrophobic material. The main constituent is calcium carbonate, and it is made by a process called extrusion. The extrusion is, how we take out, paste from our, toothpaste. We press it and the toothpaste comes out. That is the extrusion process. सेवई वगैरह बनाते हैं. Okay. So why buy dustless chalk? Even though it's 4 to 5 times costly, it's value for money. There is little wastage during writing. Okay, it doesn't break. You can write easily. Ease of life for teachers / students / cleaning staff. Okay. Now you can go and see this paper. We have described all the ingredients and the process. Okay, how how it is done. So all the ingredients is mixed, properly. A very some kind of duff. आटा गूंथते वैसा वाला आटा जैसा हो जाता है. Then you have to pass it through some kind of extrusion machine. Okay, so those things are there. It was done before I joined. So this was my job. So I was told, and then said, okay, we have worked on this thing for a long time. What we can do about it? Can we write a patent? Patent is simply not possible. The product is already there in the market. What you will say? It's not a new product, not a new idea. So I was told, why don't we study what is called writing and wiping mechanism? So we took 2 different kind of board. One is called polymer board, the other is ceramic board. Okay, you can touch it. A polymer board is like plastic. A ceramic board is made in a different way. You take a metal sheet on top of which you put some kind of oxide layer, and you pass through a very high temperature thing. So those are permanently fixed, and this ceramic board versus polymer board, it is the writing appearance. Here you can see that it is easier to wipe. Okay, writing is far more uniform. You can see here. We tried to took microscope images of it. The typical one biologists have in their labs. I actually went to biology lab for this. And in this diagram, you can see that the ceramic board has lot of metal oxide, calcium oxide, silicon oxide. Here you will only see carbon and oxygen. It's
polymer. So this is the roughness picture of ceramic and polymer board. You see that ceramic board has continuous roughness, and this is a very dispersed thing. So this is how we have proposed how material transfer happens from chalk to board. If you have continuous roughness, it will be very, very uniform. Okay, and if it's irregular, you will get irregular writing. The whole thing was done just so that we can publish chalk preparation. Okay, this is going to be interesting. सर कुछ पोर्शन कट रहा है क्या टाइटल वगैरह का? अच्छा इसमें नहीं आ रहा है. अच्छा ठीक है. ओके. Okay, so this is the study we did to understand how dustless chalk works. See, in principle, if you take any chalk, dustless or regular, if you write on the board, unless chalk breaks into small pieces, you cannot write. And during wiping, it has to go down. Okay, so dust is going to generate, otherwise it won't work as a chalk. And before us, people were doing what is called particle sample studies. So I think Patel sir के यहाँ पे होता था ना, वो बड़ा बड़ा sampler रखते थे और फिर वो जाके करते थे. So those samplers, when you run and you record, you write with one chalk or other chalk, particle counting was kind of similar only. The number of particles generated during writing wiping was comparable only. There wasn't much difference. The difference comes in the chemical and physical properties. Like we know, first is calcium sulfate, the one which we use for, gypsum, during, what is called, when we get fracture, they make this bold thing, plaster of Paris, hai? So it's a very, very hydrophilic thing. Okay. And the other one is calcium carbonate. Calcium carbonate is what is called very, very hydrophobic. That the calcium carbonate chemistry we sometimes say that we take lime, dissolve it, and wash the do whitewash. Calcium oxide gets converted into calcium carbonate. Okay, and if you do it properly, it doesn't come back to your skin. So okay. Calcium sulfate is very, very hydrophobic, and it's a very, very flaky structure. It's like a page of paper. Whereas calcium carbonate is hydrophobic. It doesn't attract water. Okay. And it's like a ball. It simply settles down. So that is how we have described the dustless chalk. This is a scientific measurement we have done. I think we can also do it. Loss on ignition kind of experiment you can do with a regular chalk and dustless chalk. So on a regular chalk you get like 20% loss on ignition. You start with 100, it goes to 80. In calcium carbonate salt, chalk, it's almost negligible. Comes from other ingredients also, but this is the main ingredient. Now this is coming to my main work. I had a PhD degree in NMR spectroscopy. Titles are chopped off because of other reasons. So a lot of this is biology work. Okay, and towards end we will again come back to chemistry. Okay, so the students of chemistry know that in NMR spectroscopy we take a compound, and depending upon its functional group, the position and multiplicity appears. Okay, and there is something called intensity ratio. So what all characteristics we have? We have position of the peak, we have multiplicity, okay, and then there is a intensity ratio. See, intensity ratio doesn't depend whether you are studying aldehyde, alcohol, CH2, CH3, doesn't matter. Whereas if you talk about IR or UV, in IR, carbonyl group gives very, very strong signal. So in IR there is a condition that unless the bond oscillate and polarization changes, you are not going to get signal. So that will depend upon the molecular characteristics. The same thing happens in UV. If there is a good conjugation, you will get signal, otherwise you are not going to get. In NMR spectroscopy, the signal comes from nucleus. So electronic environment does not matter.
Now what happens if I take a plant and make its extract, and I will get large number of compounds. Okay, so I can use multiple NMR characteristics to identify the compound. And there is another concept of two-dimensional spectroscopy. We will see how it works. So you can actually say something about the biochemistry of plant, because whatever number of compounds are there, whatever their functional groups are, they will always be in the intensity ratio will be governed by their concentration. There is no molecular nature involved. Okay, so this is what. So what we do, we study the metabolic constituent of a living being, and that is done by 1H NMR. And we know, okay, where these functional groups appear. So we can identify different metabolomics. If sugars are there, they will appear around 3 to 5. If amino acids are there, they will appear up to 1 to 3. And this is how NMR is used by biologists. Okay. And we will see what is the context of marine algae. Okay, and go to different studies. And this is the thing which is very, very useful for us. NMR is a primary ratio method. Okay, so however number of different compounds are there, I just have to take one reference. All of them are proportional to it. Whereas this chromatography or UV etc., the sensitivity varies for different molecules. So that means I have to take different references for different molecules. Okay. So we started with the study of marine algae. We see how they behave under different season, how different species look different. We started, we did some plant taxonomy with, and we also did to study some herbal preparations. So how does this metabolomics work? Respiration produces sugar from CO2, H2O and sunlight. Okay. So this glucose becomes source to produce, source of carbon to produce amino acid and other complex molecules. Okay. So there is this whole cycle runs. Okay. So this metabolism involves production and utilization of sugar in plants. Okay. And now all I have to do is take an NMR spectra and I will get to know about their relative concentration in different conditions. Okay. This is not really new. These are some very old studies, 2011, and then this is from 2002. So people were studying how you can differentiate between instant coffee samples. Okay. So if you take two different type of instant coffee samples, you will see that there are some molecules, okay, which appear in different levels. And they could also identify some molecular marker in canned tomato samples. Okay. Okay, how does CSM-CRI fit into this? Because we are connected with research of marine resources, okay, these plants which appear in sea are also of interest to us. And there are 2-3 different classes, green, brown and red algae. It's not really clearly visible. And CSM-CRI could make something valuable out of it. So CSM-CRI has a patent where we could make what is called agarose from these marine algae. Okay. So how do we study it? We simply take the algae, crush it in water and run NMR spectra. Okay. So we found that different algae give the different spectra. And then we run what is called 2D to identify, okay, which compound is which. So I have put a very simple example. This is what we call COSY. I think it is there in your syllabus, right? Some COSY HSQC are there. So in COSY what it does is, the same proton axis is shown in X and Y axis, and the cross peak says which two protons are J coupled, and J coupling comes only from bonding. So if I have a cross peak,
it will say that okay, these two X and Y protons are chemically bonded. That is how I can identify different fragments of one molecule. They will appear as cross peaks in my COSY spectra. That is how I can put different names here. Okay. So we studied how they look in different season. See, one thing, it's a very interesting thing, because if you take my blood test, whether you do it in summer, winter, rain, it is going to appear similar, right? That's not really true about these plants. These are low level organisms, है ना? So that is their whole defense mechanism, life depends upon their condition. Okay. So these are affected by environmental conditions. The other thing, they are affected by their life cycle stages. So what I was told that what is called papaya has male and female plants. Okay, some grow to become male plants, some grow to become female plant. In this life cycle stages are interesting. They have 3 stages: male, female, and tetraspore. People are very, very interested because CSMCRI, what they did, they said that they could take out agar from seaweed, but they also found that before taking agar, they had to crush the seaweed. Like this, वो गन्ना पेरने का मशीन होता है ना, उससे करते हैं. So that liquid which comes out, it's a very good fertilizer. So that seaweed extract is a very good fertilizer, है ना? So they wanted to, and then there was technology was transferred, and these things are produced in industrial scale. Okay. Okay, so now अच्छा, अब आप देखिए इसमें से मेल फीमेल टेट्रास्पोर आपको जानना इसलिए भी जरूरी है, बिकॉज अगर हमको खेती करनी है ना, देन वी हैव टू थिंक अबाउट ओके कि कौन सा वाला है जो अच्छा है. मतलब cows are there for milk, and then sand are there for other purposes. So this kind of differentiation is important if you want to run activities in a sustainable manner, है ना? So that was the idea. So the people, जो लोग इसको बार-बार study करते थे biology background से, they could identify the plant and they say, okay, let us see whether we have a chemical signature, actual proof for that, है ना? And the other thing is this particular plant, Gracilaria dura, is the one which is commercially cultivated. वो Gracilaria dura का extract वगैरह बनाते हैं commercial large scale पे, and for that see that is grown in sea. अब समुंदर में तो आप एक जगह पे रखे हैं और उसमें क्या आ गया आपका 3-4 महीने में आपका बहुत ज्यादा उस पर कंट्रोल नहीं है ना? So and then people have to do sampling etc. Okay, Gracilaria that has a particular value. Okay, they can buy for 4 rupees kg. Other thing is zero value, है ना? Because you don't know, they might give some side effect. Think about it that way. So people have to identify. Gracilaria has a value. Others nearby, neighbors, which look similar, has little value. So of course you cannot put a botany PhD person there. So they were looking for experimental conditions. When you are running big plants, you have to do quality control and things like that. So what we did, we took a large number of Gracilaria dura plants from oceans, and the same number of plants we have taken, we took from the ocean, and half we analyzed immediately, half we kept in culture condition for some time, just to understand how it happens. So what we found, we took like, and there is, okay, so we found large number of samples, and we found that the spectra is largely similar. Okay, Gracilaria, you take over the life cycle, spectra is similar, and there is another trick. उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्पेक्ट्रा का छोटा-छोटा पीस कर लेते हैं और we sum over the small regions. छोटा सा एरिया लिया, उसको सम कर लिया,
फिर दूसरा ले लिया, दूसरे को भी सम कर लिया, and we did normalization also. So in that way the whole spectra is converted into numbers, a series of numbers, and then we obtained average and standard deviation of those numbers, and we have published what is called a model spectra. Okay, this is kind of interesting. I wish this portion was not properly cut. So this is an example, we also have what is called some agriculture small unit is there. The people who they keep testing these seaweed extract for land plants. So they were doing this study on tomato plants. So what they found is, if you take tomato plant seed, dip in that algal extract for 11 minutes and then plant it. So the seeds which are dipped in that extract, they grow thicker and taller after 30 days. After 3 months everything is equal. Okay, so this is interesting because you can get a very high growth rate, and that so we started seeing why this thing happens. Now I know how to see biochemistry with NMR spectra. So we took these 30-day samples and recorded NMR spectra, and we found that some of the metabolites which are basically characteristic of stress conditions are far less when we have dipped the seeds in seaweed extract. We also had a model of what is called nutrient sphere. Nutrient sphere मतलब क्या है, हमने जब सीड को डुबाया तो सीड ने कुछ मेटाबोलाइट्स ले लिया, पानी ले लिया, शुगर्स ले लिया, ताकि वो अपना जर्मिनेट होने के लिए जो उसको कंडीशन चाहिए वो उसको मिल गया. That we are trying to get some data on. It's an ongoing study. Okay, now we know how to record NMR spectra of plants. So this is something we started looking into herbal preparations. Okay, पौधे का तो देख सकते हैं, अभी पत्ता और फल का एक मिक्सचर है उसका कैसे होगा करके. So what we found is that if you take different herbal preparations, Trifla, Bowl Care, Shankhavati, these are commercially available. These are off the shelf product. I have not made anything. Okay, so different preparations give different NMR spectra. It's what is called DNA of that thing. It's arising from their biochemistry, and this whole thing is a characteristic of biochemistry. And then what we did, we took 4 different Trifla samples, and we found that the spectra was comparable, and then we have given a model spectra. See, one of the bigger concern with this herbal preparation is there is actually little quality control. See, आप paracetamol लेंगे, there are n number of tests. Okay, labs can give you certified report. Okay, in herbal preparation, nobody knows what is the test is. What kind of test I can do to say that this is genuine and this is not genuine. And this is a bigger problem for clinical trial. Suppose I want to see a long term or short term effect on 100 people. I have to give the same thing to 100 people. I cannot afford batch to batch variation, or at least I should do a study and say batch variation is like 2%. So this study addresses that particular problem. And this is the second study. See, the problem is with this herbal preparation is you cannot really identify metabolites there. The reason is the herbal preparations, sometimes they are acidic. आप खाते हैं थोड़ा खट्टा लगता है. Acidic is there, and sometimes they contain heavy metals also. It's a known thing. Okay. Not heavy metal means not really the polluting one, but the other ones like zinc, copper, iron, etc. So if those things are there, NMR peaks are shifted. So what experiment I can do so that I can take care of acid effect or pH effect and metal removal. So we did, we started giving a EDTA treatment. So as you can see, if you don't give a treatment, the spectra is like this.
Okay, peaks are there, but they are slightly broad. If I add little bit of EDTA, peaks become sharper. Okay, if I get more add more EDTA, peaks are again sharper, but EDTA peaks are also appearing. Okay, so 4 peaks for EDTA are appearing, 2 for EDTA, free EDTA, and 2 for EDTA which has made complex with some metal ions. There is another trick which is called base hydrolysis. So here what we do, we make the plant extract, take the pH to 10 and leave the extract at pH 10 for 15 minutes. Whatever metals are there, they will precipitate as hydroxides, and that simply I have to bring back the pH to 7. This works like a charm. There is no EDTA peaks. It doesn't affect my NMR spectra, and it doesn't affect my assignment, and then I can identify which metabolites are present. And because NMR spectra is quantitative, sorry about this portion. This one. So this portion, as you can see, we took different herbal preparation, and we were seeing, okay, they have given some prescription is given on the bottle पे बोलता है 2 गोली खा लो, 4 गोली खा लो, etc etc, है ना. So what we found that if you see that number, they will say, if you do the mathematics, है ना, कोई बोलेगा 2 ग्राम खा लो, कोई बोलेगा आधा ग्राम खाओ, कोई बोलेगा 4 ग्राम खाओ. पर अगर हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करें, है ना, ग्लूकोज जो सेंटर है आपका मेटाबोलोमिक्स का, प्लांट ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज से बाकी सारी चीजें बनती है. सो ग्लूकोज का जो लेवल है सारे हर्बल प्रिपरेशन यहाँ पर त्रिफला में सबका सेम है, 10% वेरिएशन है. तो किसी से भी लो, आपको एक ही डोज यूज करना है. वो तो ऑलरेडी दे ही रहे सर आपको. उनके अगर लेवल से आप चलोगे तो कोई बोलता है आप 2 ग्राम खाओ, कोई बोलता है आधा ग्राम खाओ करके. यहाँ पर है थोड़ा सा ऐसे इस तरह से. एग्जैक्टली सर, ये तो क्लिनिकल ट्रायल से पता चलेगा. नहीं, वो ऐसा है ना, वो आप समझ, उनके पास भी नहीं है साधन, वो आप क्या बोलोगे उनको. आप ये समझिए कि 2004 से, या जब से 2D स्पेक्ट्रोस्कोपी का डिस्कवरी हुआ है 1980s में, तब से प्लांट की स्टडी कर रहे हैं लोग. ठीक है, और इसके ऊपर रिव्यूज अवेलेबल है, बट वो आगे जा नहीं पाती है कि कैसे उसको यूज करें. और मतलब एक तो है कि कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, फिर आप उसका रास्ता क्या निकालोगे, और जो बनाने वाले हैं वो तो छोटी छोटी यूनिट्स में बनाते हैं, बहुत ज्यादा स्केलेबल, और प्रॉफिट मार्जिन वो सब तो बहुत ज्यादा रहता नहीं है. मैं उनको बोल भी दूं कि आप NMR टेस्ट कर लो, वो बोलेगा मेरे पास भाई आप 4 करोड़ की मशीन लेने की बात करते हो. नहीं, देखिए, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, देखिए 2 चीजें हैं. ऑथेंटिक से आपका क्या मतलब, ऑथेंटिक मतलब कि भाई आपने जो लिया वो वही है कि नहीं करके. उसको चेक करने का दूसरा तरीका होता है ना, जैसे आप आटा लेते हो या चावल लेते हो, वो तो मेडिकल टेस्ट नहीं आता ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन चेन है, शॉप है, नियम कानून भी तो होते हैं ना, वो नियम कानून का उसमें काम करता है. नहीं, इसका ये क्वालिटी कंट्रोल का ये है ना सर, आप इससे कर सकते हो, लेकिन अभी ये क्या है कि भाई अभी तो हमने पेपर भेजा है, अब वो शायद वो एक्सेप्ट करे, और वो रेगुलेटर जो उनको चलाने वाले लोग हैं वो बोले कि भाई आप कुछ तो रखो करके. जैसे मैं आपको बताता हूं, हनी का कमर्शियल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट करता है. वो बेसिकली NMR मशीन होता है. ब्रूकर वाले लोग उसमें दुनिया भर के हनी सैंपल का रिप्रेजेंटेटिव स्पेक्ट्रा लेके लोड किए हैं, कुछ 20-30 हजार. हनी प्रोफाइलर के नाम पे आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो. लेकिन अब उसमें होता क्या है, उन लोगों ने क्या किया, पूरी दुनिया से हनी के सैंपल लिए, फिर बोला कि भाई अगर आप इस एरिया का हनी लोगे उसमें ये कंपाउंड आता है, दूसरे एरिया का लोगे तो दूसरा आता है, इस फूल का ये आता है, दूसरे फूल का ऐसा आता है. ठीक है, और तो वो उस तरह से बेसलाइन बना के उन्होंने पूरा लेवल बताया हुआ है, यहां से इतना होगा. तो
अगर आप अपने तरफ से सुक्रोज डालोगे, शक्कर डालोगे, तो वो उसमें दिख जाएगा। लेकिन अब यह है कि अगर ये इस्टेब्लिश्ड है, वो कमर्शियली सिस्टम आपको बेचते हैं, लेकिन उसका स्टोरी ये है कि अगर आपने उनसे सिस्टम ले भी लिया 3-4 करोड़ का, फिर आप रन किए और रन करके या तो आप डेटा देख लो, अगर आप उनको बोलोगे कि आप इसको सर्टिफाई करो, वो सर्टिफाई करने के अलग पैसे लेते हैं वो। हाँ नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूं, इसमें मैं साइंटिफिक जो आपको चाहिए, देखिए दो चीजें होती है। समस्या का समाधान मतलब विज्ञान के जरिए भी हो सकता है, नियम कानून के जरिए भी हो सकता है। ब्रांडिंग, कमर्शियल फोर्सेस जो होते हैं ना, इकोनॉमिक फोर्सेस, जैसे डाबर वाले हैं, ठीक है, तो डाबर वाले अपना बेच रहे हैं, उनका उसमें ब्रांड है, ठीक है। और आप जो ये बोल रहे हो कि आपको वो देते हैं करके गलत, इवन जो वेस्टर्न मेडिसिन होती है ना, पैरासीटामोल और वो सब करके, उसमें भी फर्जी तो दवाइयां बिकती है सर। अब सर देखिए, आपके लिए रास्ता है कि आप प्रॉपर शॉप पे जाके प्रॉपर चीज ले सकते हो, और किसी ने कोई कॉपी बना दिया, उल्टा सीधा कर दिया, वो लोग का तो वो तो नियम कानून से ही होगा, और इसके लिए रास्ता है। अब वो कैसे होगा, कब, ब्रांड वैल्यू बिल्कुल रखते हैं, वो तो जान दे लेंगे आपकी। हाँ। तो मैंने तो कोशिश की, हमको बताया जाता है कि आप लोग जो है वो थोड़ा सा डेली लाइफ की चीजों के आसपास काम करो। हम लोग डायरेक्टली मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। CSIR जो एक सोसाइटी सी है, उसके वाइस प्रेसिडेंट SNT मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डे होते हैं। तो हमारे यहाँ रेगुलरली ये डिस्कशन चलते रहता है कि आप लोग कुछ पब्लिक के इंटरेस्ट का काम करते रहो। तो जो उस तरह के पोर्शन है मैंने आपको प्रेजेंट किया। कोई एक पोर्शन है जिसको लगता है कि सर ये आपने क्या बोला, थोड़ा सा आप दोबारा बताओ। हिंदी में बताओ, छत्तीसगढ़ी में बताओ, मैं बोलता हूँ। कौन सा पपाया वाला? वो था मैडम कि वो नहीं, उसमें क्या है कि देखिए, वो बेसिकली ये है कि आप अगर एक खेती कर रहे हो, राइट, मैंने धान बोया, उससे जो सीड निकला उससे मैं धान बो सकता हूं, है ना। तो ये जो पर आई थिंक दूसरे कुछ प्लांट में, आई सपोज केला में या फिर जिमीकंद वगैरह में होता है ना, वो थोड़ा दूसरे तरह से होता है। तो इन प्लांट्स के लिए वो थोड़ा लाइफ साइकिल अलग है ना, उसको भी समझने की कोशिश जारी है। पपाया एग्जाम्पल बताने के लिए कि भाई वो पिक्चर थोड़ी अलग है, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये प्लांट ऐसे हैं कि मतलब गर्मी में जैसे एक क्लासिफिकेशन होता है ना, कोल्ड ब्लडेड एनिमल एंड हॉट ब्लडेड एनिमल। एक, हाँ सॉरी। सो बेसिकली एक तरह के जो एनिमल होते हैं वो अपना मतलब कोई भी वेदर हो, अपना बॉडी का कंडीशन वो मेंटेन करते हैं। और दूसरे तरह के होते हैं कि भाई जैसा मौसम है वैसे वो अपना चालू हो जाते हैं अपना। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको समझने में थोड़ी सी हमको मेहनत करनी पड़ रही कि भाई वो आखिर है किस तरह से करके। अदरवाइज हम उनको नहीं समझेंगे तो ये खेती किसानी टाइप की जो चीजें हैं। एक बड़ी प्रॉब्लम ये है, देखिए हम लोग इसको बोलते हैं कि ये सस्टेनेबिलिटी के लिए है। सस्टेनेबिलिटी के लिए ये है कि भाई देखिए दुनिया में एक तो थोड़ा सा सपोज एक पॉपुलेशन बढ़ रही है, दूसरा सरकारें बोलती है कि भाई आप गरीबी कम करो, भूखमरी हटाओ। अब आप क्या करोगे? या तो आपके पास लैंड है, ठीक है, लैंड में आप खेती कर लो। अब खेती लैंड तो उतना ही है, आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या है, आप फर्टिलाइजर डालो। केमिकल फर्टिलाइजर्स के भी प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना। और अगर सपोज इंडिया में अभी काफी दिन से चल रहा है कि भाई आपको यूरिया चाहिए, फॉस्फेट चाहिए, बहुत सारा हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा फर्टिलाइजर हो जिसको डालो और आपकी प्रोडक्टिविटी आ जाए, है ना, लेकिन आपको वो चाहिए, आपको हर साल चाहिए, तो अब आप क्या करोगे? यहाँ पे लोगों ने बोला, ये बोलते हैं ना, इसको एक्वाकल्चर बोलते हैं लोग, कि भाई आप समुद्र से रिसोर्सेस लेते हो, समुद्र में खेती करके आप मतलब ह्यूमन लाइफ को आप सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। सो उसके लिए हमको थोड़ा सा लाइफ साइकिल कि भाई वो कैसा बिहेव करते हैं अलग अलग एनवायरनमेंट में, उसको हमको समझना है। और उस केस में NMR एक टूल की तरह काम करता है। कैसे करता है या कोई उसमें बीच में पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो मैं बता सकता हूं।
पपाया थोड़ा सा अलग वो था। पहले जो बता रहे थे एल्गी से क्या फर्टिलाइजर बनता है? हाँ, वो क्या अभी अवेलेबल है मार्केट में? इतना बड़े स्केल पे हो रहा है? CSM सेराई वालों ने 40 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ट्रायल किया था। हाँ, और वो कमर्शियली अवेलेबल है, 8-10 साल पहले से अवेलेबल है। हाँ, ये तो चाहिए जो अथाह है, हाँ, जो हमारे पास बहुत बड़ा इलाका समुद्र का है, उसमें से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो कंपनी का नाम एक्वा एग्री ऐसा कुछ है, कमर्शियल एंटिटी का नाम। बहुत यूजफुल है। बाकी जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसके कंपैरिजन में उनका क्या रिजल्ट है? नहीं, उस तरह का उन लोग जो एग्रीकल्चर को जो समझने वाले लोग हैं उन लोगों के साथ मिलकर ट्रायल हुआ था। सिंपल सा इम्पैक्ट होता प्रोडक्टिविटी पे। हाँ, प्रोडक्टिविटी पे। हाँ, रिमार्केबल है प्रोडक्टिविटी। यहाँ हमने ये डाला है जो एक्वा वाला जो डाला है जो मैं समझता हूं कि भाई आप जो आपके पास रेगुलर जो कन्वेंशनल केमिकल फर्टिलाइजर है उसको आप 1/10 रख के और बाकी इसको डाल के सप्लीमेंट करके आप प्रोडक्टिविटी उतनी ही आपको मिल सकती है। और अभी जो एक नया ट्रेंड चला है ऑर्गेनिक वाला, ये तो उस रिस्पेक्ट में कोई बात है तो ये तो आपका ऑर्गेनिक ही हुआ ना सर। हाँ हाँ, पूरा ऑर्गेनिक हुआ। ये प्लांट में तो 90% वाटर रहता है, और मान लो जैसे कई जगह पे सपोज आपको खेती करने के लिए पानी नहीं है तो इसका निकाल दो, पानी भी मिल गया आपको, फर्टिलाइजर भी मिल गया। साइड इफेक्ट जिसके ना हो वही अच्छा है। ये तो इसका साइंस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है सर। जैसे मैं बताया ना आपको, आपने सपोज सीड को आपने एक्सट्रैक्ट में डाल लिया, फिर उसने कुछ अपना जो लेना था उसने ले लिया। एक साइंटिस्ट आया था जर्मनी से जो इस तरह का काम करते रहता है, मतलब प्लांट और ये सब होस्ट गेस्ट रिसेप्टर का। उसका कहना था कि जो कोविड वैक्सीन बनी थी जिसमें जो उसके जो भी एंटीजन एंटीबॉडी है और वो वायरस से जो कनेक्ट होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग इस तरह की स्टडी से आई थी। वो लोग जानते थे कि किस प्लांट में कौन से है, मतलब किस वायरस में कौन सा प्रोटीन को कैसे चिपकाना है, ऐसा। Okay, so here you all have been offered the opportunity to ask open-ended questions or any queries if you all have, please. Anyone? छत्तीसगढ़ी पूछ सका था। प्लांट में भी ट्रांसफर हो सकता है ना? क्या चीज? अगर कोई डिजीज एल्गी का होगा तो वो प्लांट में भी ट्रांसफर हो सकता है ना। चांसेस तो है, लेकिन अब उसमें आप ये देखो आप कर क्या रहे हो। आप समुंदर से, आप जो बोल रहे हो चांसेस बिल्कुल है। अब लेकिन इसमें होता क्या है, आप देखो, आप एल्गी लेते हो समुंदर से निकालते हो, वो बेचारे को आपने क्रश कर दिया, एक्सट्रैक्ट है, आप स्टोर करके लेके आ रहे हो 2-4 महीने के बाद स्टोरेज पीरियड में, वो बचेगा बेचारा जो भी बैक्टीरिया वायरस। सो चांसेस तो है। Anyone else? MSc students? Okay, so thank you, sir, for your golden words. It was indeed motivating and extremely informative. It was an honor to hear from you and have you amongst us. Okay, so you absolutely came out to be a real inspiration for us, the way you have proposed multiple solutions to various issues, sir. Now I would like to call Mithilesh ma'am for present a vote of thanks. Thank you. A very good afternoon to all of you present here. I, Dr. Mithilesh Gupta, Assistant Professor, Department of Chemistry.
It's my privilege and honor to propose a vote of thanks to our speaker, Dr. Rajendra Singh Thakur sir, who gave us knowledgeous and informative lecture on chemical and biological processes. Sir has told us about how can we remove fluoride and arsenic by alumina fastly and safely. After that, he told us about how we prepare dustless chalk and its usefulness. After that, how this dustless chalk can work. Okay. After that, sir has told us about the NMR studies in marine algae and potato plants, papaya plants, etc. So, I heartily thank you, sir, for your wonderful lecture. So, on behalf of Department of Chemistry, Government Nagarjuna PG Science College, Raipur, and on behalf of CG Cost, NCSTC, DST, GOI, and on behalf of all the faculty members, research scholars, PG and UG students, I thank you, sir. Thank you very much. As we all know, this event is a part of National Science Day Celebration 2023, and the theme of which is Global Science and Global Well-being. This event is sponsored by CG Cost, NCSTC, DST, GOI. So I also thank to this sponsoring agency too. I also thank our senior professor, Dr. S.K. Patle sir, for systematically conducting this event. I thank you, all the faculty members, research scholars, and all the students for their patientful listening and their valuable time. I also thankful Dr. Alok Luka sir for their technical support, without which it couldn't be possible to complete easily. Once again, I thanks to one and all for their attention and their support for successfully completion of this event. Thank you very much. I would call Patle sir to share a few words. Please. Thank you very much, Thakur sir, for such a informative lecture. सारी बातें तो हो चुकी है, सर ने बहुत सारे केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस पे अपना जो रिसर्च वर्क था वो बताया। खासकर जो डस्टलेस चॉक वाली जो बात है हम लोग भी यूज़ कर रहे हैं, और डस्टलेस चॉक का हम लोग तो केवल यूज़ करते हैं, सर ने उसको बनाया है और आप लोगों को बताया कि कंटेंट में क्या अंतर है। एक में कैल्शियम सल्फेट है जिप्सम वाला, और दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और बिल्कुल सही बात है कि जब उसको हम लोग लिखते हैं और रब करते हैं तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, और जो डस्ट वाला चॉक होता है वो पूरी तरह फैलता है, इनहेल करते हैं हम लोग स्टूडेंट, या इस तरीके से वातावरण में भी जाता है। तो बहुत अच्छा आज का इवेंट रहा। मैं रसायन विभाग की ओर से, शासकीय नागार्जुन विज्ञान महाविद्यालय की ओर से आज के एमिनेंट साइंटिस्ट और स्पीकर ठाकुर सर का फिर से धन्यवाद देता हूं। और आप लोगों के बीच में एक चीज जो रह गई थी कि जो ठाकुर सर आए हैं, ये मैडम जो हमारे साथ अर्चना आसटकर मैडम हैं, उनके बेटर हाफ है, पतिदेव है। ये बात मैं डिस्क्लोज करना चाह रहा हूं, और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि दोनों ही जो दंपति है उनका सहयोग हम लोग को मिल रहा है। और सर तो अगर इसके बाद भी रायपुर आते रहेंगे, हम चाहेंगे कि वो यहाँ पे कुछ लेक्चर्स और कुछ इवेंट्स में जरूर भाग लें और हम लोगों को थोड़ा सा ज्ञानवर्धन के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद सर। Thank you all. You all were a wonderful audience. Once again, thanks to the hard work that all the team members have done, teachers, students, and organizers to organize this event. And thank you, sir, for gracing us with your presence. Thank you all.